Okay, screen will start. स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Okay. So today we will discuss how to design a particular counter which generate a particular sequence. In the last lecture we had discussed that there are many type of counter, introduction of counters, what is the purpose of counter, synchronous and asynchronous counter. Let's previous lecture then we will. So we have discussed that counter is a device which count the number of clock pulse. It can also be called as frequency divider because it divides the frequencies. Counter can count in two different ways. It may be counting in up way like 0, 1, 2, 3. It is an incremental counter, which is also known as up count. Similarly, it may be a down counter, which count from top to bottom, n minus 1, n minus 2, n minus 3 up to 1, 0. So counter may be count and not also. Now present count of the counter. What is the correct value of the counter is called the state of the counter. Now counter contains set of flip-flops. So it may be questions, it may be arise the question that how so counter design because also a sequential. So we know that in any sequential circuits there exists a memory element called flip-flop. The counter comes into the sequential circuits, so definitely it will consist by using the flip-flops. Depending which sequence we are going to generate, it is dependent on n bit counter. We will discuss later how bit is required for generating by the counter. So n counter will have n flip-flop. Here n is number of it the four sequences, then it required four, four by one flip. And we know very much that flip-flop is only capable for storing one bit. It cannot store more than one bit. Storing a single bit, we require a single flip-flop. So for generating a n sequence, n bit of sequence, we require n flip. And based on this, we can have 2 raised to the power n states. If we have 4-bit counter, it can have total number of states, that is 16. Each state frequency is equal to total frequency divided by 2 to the power. Now we did the classification of counters. There are two types of synchronous and asynchronous. We had already discussed in the previous lecture. The clock goes in all the flip-flops. It is called a synchronous counter. And the design of synchronous counter is something like that. There are 4 flip-flops connected to each other with some combinational circuits. And there is a clock which provides simultaneous clock all the flip. So it is fast in nature because it taking the clock pulse simultaneously. So it is fast as compared to a synchronous counter. It is a 4-bit counter which generates 4 states continuously using one clock pulse. It can take one clock pulse and generate 4 sequences. Then because counter is clock 7 flip-flop
and the output of one flip flop is considered clock pulse or an input for the second flip flop. Then similarly, the output of the second flip flop is considered as an input or a clock pulse as the third flip flop. And the output of third flip flop is considered as the input of fourth flip flop. And output of fourth flip flop is considered as the input of first flip flop. So clock pulse is working as a input for the next flip flop. So this kind of arrangement is called asynchronous counter. So it's required more time as compared to synchronous because if flip flop want to change the states, it required clock pulse. And at a time, only one flip flop can change the sequence or change the states. So this is how differ the synchronous and asynchronous counter. Then there are another type of counter which is called binary counter. Basically, all counters are mostly counters are designed in the binary way, but it's okay. There are certain number of sequences which can be generated by the counter. It may be decimal number. So there are another types of counter which generate only binary sequences, and we provide the sequences that you have to generate only those sequences. So we can design the counter in this way. Counter which follow the binary sequence is called a binary counter. As I told you, that is the counter which is designed for generating the binary sequences only. For example, we can understand with these examples like we have for uh, 2-bit counter. That 2-bit counter contain the total number of state is 2 keep power 2, that is 4. Two raised to the power 4, and it can generate a number of sequences in a binary way, like it can generate 0 0, it can generate 0 1, it can generate 1 0, generate 1 1 also. So there are total 4 states. So if we are using 2-bit counter, 2-bit binary counter, then it can capable to generate 4 sequences. Similarly, suppose if we are using the 3-bit counter, then they are capable for generating the total 2 raised to the power 3, that is total 8 states. So these are the sequence, that means we are talking about these sequences 0 0 0 1 1 0 1 1. These are sequences generated by the 2-bit counter, and because it is generating in a binary way, so that is why it is called a binary counter. So there are 4 total number of states generating by the counter. So we can provide a particular sequence like counter only 2 0 1 2 3. That is our right. So we have to design for this purpose. We have to design 2-bit counter, and we provide the sequence 0 1 1 0 and 1 1. So in this way, it only generate 0 1 2 3, then 0 1 2 3 in this. So this is how the binary counter works. The second point is fundamental purpose of binary counter is record the number of occurrences of some inputs. Here we are taking the purpose of binary counter. It is used for record the number of occurrences. That means if
one input given to the program, then we can count how many times the single input is given to the. So we can count the total occurrences of the input. Like suppose you given an input like two, but how many times you have given two? Is the four times. This thing is done by the binary counter. So any inputs, how many times it is given to the program, this is done by the binary counter. Any clocked sequential circuit whose state diagram contains a single cycle called a counter. कोई भी एक sequential circuit हो सकता है जिसके अंदर क्लॉक लगी हो, जिसके स्टेट डायग्राम में एक सिंगल साइकिल हो, उसे भी हम काउंटर कह सकते हैं. Now let's design the counters. तो हमने जितना भी theory discuss किया है, we will implement all these things by designing a single counter. So as I told you, we can design a counter which generate any number of sequences, and the sequences is given by the user. That these particular sequences should be generated by the counter. Like you are given a for loop I equal to 1, I is less than equal to 10, plus plus. So in most of the time you given this kind of for loop in your program. So here you are telling to the counter that it start with the 1, check the condition whether it is less than or equal to 10. If it is less than, then increment it by 1. So in every one clock pulse, it changes the states. So here a single counter design which generate sequences 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, then it will terminate. So after 10, it will not generate any sequence. So for every sequence, it performs something. Whatever the body contained by the for sequence, it execute the body of the for loop. It should start with the 1 and terminate in the 10. That is done by the counter. So we are going to design a counter which generate that particular sequence. Take one example. We want to design a counter which generate 0, 3, 5, 9, 10. And I want to use the SR flip-flop, right? So let's start design of a counter for a particular sequence. So you should understand the way how to design a counter. That is a single example. Just check this example, how we are designing this counter, or how we designing this counter which generate 0, 9, 10 sequences. You can generate any number of sequences. So in order to perform, you should know first the excitation table. Excitation table of SR flip-flop. So I told you in the previous lecture that if you know, then you are capable to first show excitation table.
excitation table for SR flip-flop. जिस भी फ्लिप फ्लॉप्स हम लोग जिस भी फ्लिप फ्लॉप्स हम काउंटर डिजाइन करने वाले we should know the excitation table for that flip flop. And what is excitation table tells us? It tells us if the present state and next state is given to, we can find the input, right? What should be the values of S and R? We can find out. So this tells us the excitation table. Let's draw the excitation table of SR flip-flop first. Then it is help to design the counter which generate 0, 3, 5, 9, 10 sequences. So excitation table SR flip-flop. This state consider as a Q of t. Next state we have considered as a Q of t plus 1. Then input is S and output is R. So truth table is something different with the excitation table. In the truth table, we have given input S and R, and we have to find the present state and next state. But it is just opposite to the truth table. We have given present state and next state, but we have to find the value of S and R. So let's start finding. If present state 0, next state 0, then we have already designed in the previous lecture what is the excitation table of SR flip-flop. So if present state is given 0, next state is given 0, then the value should be in S is 0 and R should be don't care, that is cross. Similarly, if the present state is 0, next state is 1, the value of S should be 1 and the value of R should be 0. And the third sequence, if the present state suppose present state is 1, next state is 0, then excitation table tells us the value should be in S is 0 and the value of R should be 1. Similarly, present state is 1 and next state is 1, the value of S should be don't care, that is cross, value of R should be 1. So this is the excitation table of SR flip-flop. Hello? Sir, screen is not visible. Okay, just wait.
Okay, now it is visible. Yes, sir. Okay. So this is the Yes, sir. excitation table. Oh, this is the excitation table for SR flip-flop. Now help us to design. So 0, 3, 5, 9, 10. First of all, we should take the binary values for this sequence. So let's write the sequence first. So in the decimal, we have given 0, 0, 3, 5, 9, 10. So first of all, we have to write the decimal values in 0, 9, 10. We have to use the SR flip-flop. We have given here, you have to design a counter by using SR flip-flop, and your counter should be designed 3, 5, 9, 10 sequences, right? So first you should write the decimal values or sequences in this way. That is the first task you have to do. Find out the binary values for the decimal values. So the check the maximum decimal number. Here the maximum decimal number is 10. And if you got the binary values of 10, you get 1010. So let's find out the binary value first. Then we can find it how many number of bits it required to represent 10. So 0 can be represented in 4 times 0. We are taking 4 bit. I just remind to you, just wait of 2 minutes. 0, 0, 1. That is the binary representation of value 3. Now decimal value 5, 0, 1, 1. That is the binary representation of decimal value 5. Now 9, 1, 0, 0, 1. And 10, 1, 0, 1, 0. So here each bit represented in 4 binary bit, because there is a number 10 which is a maximum number which required 4 binary bit to represent, right? That is why we say 4 bit sequence, and 1 bit is stored in one flip-flop. So for designing 4 sequences, 4 binary sequences, we required 4 flip-flop. So let's consider the name of flip-flop. Let's change the color so that you can understand properly. A, B, C, and D. Now these are inputs in our counter. So right now we are preparing the input, right? We have given sequences 0, 3, 5, 9, 10. We have to convert the binary values and finalize how many flip-flop we required, right? So we required 4 more flip-flop because we have given 4 input. These are called inputs, right? A 0, 0, 0, 1, 1. This is the inputs. For B, these are inputs 0, 0, 1, 0, 0. Similarly, C, these are given inputs, and for D, these are the inputs. Now, for every inputs, we have to design the values of SR flip-flop. So let's do one by one. For input A, we are preparing the flip-flop S and R
for values A. So for value A, it is SA, and because we are using SR flip-flop, for every input, it is SA and S, sorry, RA. So here we have to write RA. So SARA. तो इस तरह से आपको इसको डिजाइन करना होगा। इसी तरह से दूसरा इनपुट जो बी है उसके लिए एस बी आर बी, एस एस बी आर बी। Similarly, for input C, it should be S C R C, and for input D, it is S D R D. राइट, सो इतना करने के बाद कि सभी इनपुट के लिए हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप को प्रॉपर अरेंज कर दिया है। ए इनपुट के लिए एस ए आर ए, बी इनपुट के लिए एस पी आर बी, सी इनपुट के लिए एस सी आर सी, और डी इनपुट के लिए एस टी आर डी। Now, after preparing all these things, we have to arrange the values of SR flip-flop for A values. So आपको A के इनपुट को कंसीडर करना है। अब यहाँ पे हमें जो एक्साइटेशन टेबल गिवन है, इस एक्साइटेशन टेबल में प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट हमें गिवन है। दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट स्टेट। सो सिमिलरली फॉर एवरी इनपुट, यहाँ पे हमें A गिवन है। फॉर इनपुट A, this is the present state and this one become the next state for input A, right? So present state is 0, next state is 0. Similarly, it generate the first value of SA RA, right? In the same way, the next state become the present state. So present state is 0, next state is 0. It will generate second sequence of SR flip-flop. Put A. For the next value become the next state become the present state. Present state is 0, next state is 1. Will give one sequences like SR flip-flop. Will generate to right here. I am just clearing the concept what we are going to do in the next 5 minutes. So present state is 1, next state is 1. That will give us the next sequence of SR flip-flop. And this become the present state and this become the next state. It is a one kind of cyclic process. So that you have to understand very clearly
कैसे आपको प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट कंसीडर करना है हर एक इनपुट में, राइट। यदि आप ये चीज को समझ जाते हो तो आप किसी भी सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हो। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमें ए इनपुट के लिए आर फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को अरेंज करना है, प्रॉपर उसको डिजाइन करना है कि यहाँ पे इनपुट्स क्या आने वाले हैं। तो इनपुट्स को पता करने के लिए हमें एक्साइटेशन टेबल की हेल्प, एक्साइटेशन में हमारे पास प्रेजेंट स्टेट तो नेक्स्ट स्टेट गिवन है। यदि प्रेजेंट स्टेट जीरो है, नेक्स्ट स्टेट जीरो है, so we can find easily the value of s is zero and the value of r would be cross। बट यदि हमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट ही पता करना नहीं आया तो हम उसके इनपुट्स पता नहीं कर सकते। तो ए फ्लिप फ्लॉप के जो इनपुट्स है उसमें पहली वैल्यू होगी प्रेजेंट स्टेट एंड द सेकेंड वैल्यू बिकम द नेक्स्ट स्टेट, राइट। ये हमें एक सीक्वेंस दे देगा कि एस ए और आर ए में कौन सी वैल्यू आने वाली है। इसी तरह से जो सेकंड वैल्यू थी वो बन जाएगी फर्स्ट वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट स्टेट, और अगली वैल्यू बन जाएगी नेक्स्ट स्टेट। सो प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। इस तरह से आपको पांच में से चार सीक्वेंसेस आपको इस तरह से जनरेट हो जाएंगे एक्साइटेशन टेबल में से देखते हुए। और फिर जो लास्ट वैल्यू है, प्रेजेंट स्टेट लास्ट वैल्यू होगी तो नेक्स्ट स्टेट उसकी पहली वैल्यू होगी। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है, राइट। तो इसको अब हम डिजाइन कर लेते हैं वन बाय वन। So for every input you have to consider the excitation table very carefully, right? Carefully. So let's design for input A, right? We are designing for input A. Present state is 0, next state is 0. So present state 0, next state 0. Let's look at the excitation table. Present state is 0, next state is 0, input S is 0. So we have input S 0, S is 0, and R, that means R में input होगा cross. We have to write here cross, right? Second one will I have to remove. Now second is this become the present state and this become the next state. So present state 0, next state 0, present state 0, next state 0. Now what should be the value of in SR flip flop? So 0 and cross. So just write it here, 0 and cross, 0 and cross. Now generate the third sequence, remove it. Now present state is 0, next state is 1. I hope you understanding. So present state is 0, next state is 0. So let's uh, remove this. Present state is 0, next state is 1. So in the excitation table, this is the sequence. Present state is 0, next state is 1. So input is 1 and 0. So make this sequence here 1 and 0. Now remove this. Now this become the present state. So for every next input, the next state become the, and the next value become the next state. So this become the present state and this become the next state. So 1 1. Now check the states. Present state is 1, next state is 1. This this is the sequence where present state
it is 1 and next state is 1. So for this the value should be in SR flip-flop X and so make it here cross, that is don't care condition, and 1. And for last input, it very carefully. Now this becomes present state. The last value becomes the present state, and the first value for this input becomes state. So 1 and 0 sequences have to consider. So present state is 1, present state is 1, next state is 0. So for this, the values of SR flip flop is 0 and 1. So make it input here 0 and 1. Now this is the way how to calculate the values of flip flop. So follow these sequences and generate the values for the. Now we have done put a calculate for the value S R B using the input B. Now you have to consider the second one. Then state is 0. Next state is 0. Present state is 0. Next state is 0. Present state is 0. Next state is 0. Input is 0 and cross 0 cross. Now present state is 0. Next state is 1. So 0 and 1. 0 and 1 input. It gives input 1 0 1 0. Similarly, 1 next state 0, present state 1, next state 0. It gives us input 0 and 0 and 1. Similarly, present state 0, next state 0, 0 0. It gives the input 0 and cross. Similarly, present state 0, next state 0. So again, it will give input 0 and cross. 0 and cross. That is combination. SBRB flip flop B. So I hope you understand how we are preparing the flip flop values. Okay. So I'm writing directly values. Now you are understand how preparing the values for C input. You have to calculate in the same way and generate the values of SCRC. So SCRC, it gives us 1 0 0 1 0 don't here 1 0 and 0 1. That is the values of SCRC flip flop, and for SDRD value should be don't care 0
again don't care, 0, 1, and for the last input it should be 0 and don't care. So this is the first things you have to prepare. Sir, Yes, in SD and RD inputs second and third में X1 नहीं आएगा because second it's and 1 1. mm, present state 1 and next state 1. Yes sir. So X and cross and 1 नहीं आएगा. हाँ हाँ, right. Okay sir. Okay, let's prepare properly. So for D values, present state 0, next state 1, 0 and 1, 1, 0, 1, 0. Next one is 1, 1. Present state 1, next state 1, that is cross 1. 0 and okay. Next is 1, 1 again. Cross 1. And then 1 and 0. Present state 1, next state 0, then 0 and 1. And last one is present state 0, next state 0, then that means input 0 and don't care. इनपुट से एक बार फिर से आप चेक कर लेना, अगर ये गलत होगा तो फिर काउंटर गलत डिजाइन होगा। तो एक बार ध्यान से चेक करते, एस ए आर ए तो हो चुका है, एस पी आर बी हो चुका है, एस डी आर डी एस सी आर सी को भी एक बार देख लेते हैं। 0 and 1, present state 0 and next state 1, that means 1 0, right. 1 0, 1 0, 0 1, right. 0 0 0 cross, right. And 0 1, 0 1 में 1 0, right. And 1 0, 1 0 में 0 1, right. So इस तरह से आपके फ्लिप फ्लॉप्स की वैल्यू सेट होगी। तो इसको हम पहले प्रिंट कर देते, तो इस सब स्टेप से आपको वन बाय वन आपको इस तरह से परफॉर्म करना होगा। अभी पूरा काउंटर डिजाइन नहीं हुआ है, अभी जस्ट हमने फ्लिप फ्लॉप वैल्यूज को अभी सेट किया है। फ्लिप फ्लॉप में वैल्यूज क्या आएगी, उसके एस और इनपुट में वैल्यूज क्या आने वाली है, ये अभी हमने प्रिपेयर किया है। अब हम हर एक फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज को के में के थ्रू इसका एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को हमें बनाना है। तो एस के लिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। एस ए 0 0 1 क्रॉस 0, इक्वेशन फॉर एस ए। सो एस ए के लिए इक्वेशन तैयार करना है। तो हमें के बनाना होगा। के यहाँ पर मैक्सिमम 10 वैल्यूज है, तो 10 वैल्यू है, इसका मतलब कि आपको 4 वेरिएबल वाला के में बनाना होगा, जिसमें टोटल 16 स्लॉट होंगे, राइट। और उन 16 स्लॉट में आपको ये वैल्यू फिल करनी है जो भी लोकेशंस पर जो वैल्यू गिवन है।
मैं आपको डिज़ाइन करके बताता हूँ। सबसे पहले हम के मैप बनाते हैं। ये वाली वैल्यूज अप टू टेबल, एक्साइटेशन टेबल का आपको यूज़ नहीं है। अब हमें ये टेबल को यूज़ करना होगा जो हमने प्रॉपर चारों इनपुट के लिए जो फ्लिप फ्लॉप हमने सेट किए हैं, इनका यूज़ होगा अब एक एक इक्वेशन को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन जनरेट करते हैं एस ए के लिए। फॉर एस सबसे पहले हमें के मैप लगेगा। के मैप में स्लॉट चाहिए। सो 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। इस तरह के 16 स्लॉट रहेंगे और इसका इंडेक्स भी याद होगा सभी को। इसका जो इंडेक्स है उसको फिर से उसमें सपोज ये 1 होता है, ये 3 होता है, या काम करते हैं इसको हम 0, 1, 2 यहाँ पर होता है 4, 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, ये रो छोड़ देते हैं, 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 11 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, यहाँ पर। टाइम हो गए शायद डिजाइन नहीं आएगा। ओके, वैल्यू फिल करते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो एस एक के लिए जीरो इंडेक्सिंग पर, ये इंडेक्सिंग आप जीरो लोकेशन पर आपको जीरो फिल करना, 3 लोकेशन जीरो पर, 3 लोकेशन पर आपको फिल करना है जीरो। लोकेशन ये है यहाँ पे, और 5 लोकेशन पे आपको फिल करना है 1। ये है इसकी 5 लोकेशन, और 5 लोकेशन पर करना है आपको 1। सो के मैप में 5 लोकेशन हमारी ये है, यहाँ पर आपको करना, और 9 लोकेशन पर आपको करना है डोंट केयर। दिस विल मार्क एज ए डोंट। 10th लोकेशन पर जीरो, ये है, यहाँ पे फिल करना है आपको जीरो। अब जो रिमेनिंग है बाकी सभी क्रॉस करना है। यहाँ पे क्या आएगा ये हमें, दैट इज वाई इट इज क्रॉस, इट में बी 0 और 1। सो जो हमें वैल्यू एग्जैक्ट पता होती है वो हमने फिल कर दी, जो हमें वैल्यू आपको करना है क्रॉस। अब इसके बाद आपको इसकी क्रॉस कंसीडर हो सकता है अगर उसमें 4 के पे हो या 8 हो। सो यहाँ पर आप
क्रॉस है, सो डायरेक्टली आप इसका एक ऑक्टेट बना सकते हो। 8 बिट साथ कवर हो जाएगी तो आपकी इक्वेशन बहुत शॉर्ट होगी। और क्रॉस को कभी कवर करना है जब बीच में कभी वन, अगर वन नहीं होगा तो डायरेक्टली क्रॉस क्रॉस का पेयर या कॉर्ड्स या ऑक्टेट आप नहीं बना सकते। So, ये आपको इसका बीच में इस तरह से क्रॉस ये इसका नहीं बना सकते, राइट। दो पेयर भी नहीं बना सकते दोनों क्रॉस का, और चारों आप उसका क्वार्ट्स भी नहीं बना सकते। आपको ध्यान रखनी है मिनिमम एक वन होना जरूरी है। और फिर इसके बेस पर जो इक्वेशन बनेगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एस ए इक्वेशन यहाँ पे जो बनने वाली होगी, दो पार्ट बना, जीरो सेकेंड स्लॉट होता है हमारा 0 1, थर्ड स्लॉट होता है 1 1, फोर्थ स्लॉट होता है 1 0। इसी तरह से ये वाला स्लॉट होता है 0 0, 0 1, 1 1, 0। यहाँ पर 0 0 का मतलब है हमारे पास वेरिएबल्स है यहाँ पर ए बी सी डी, राइट। सो ए बी को हम ऊपर रख लेते हैं, फिर करते हैं ए बी के जैसे, और इससे कंसिडर करते हैं सी डी के जैसे। तो जीरो बनता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला जो ऑक्टेट है इसको कवर करने के लिए और कॉलम कवर उसमें डायरेक्टली लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरी रो कवर हुई है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी। ये हो गया फर्स्ट रो पूरा। चारों कॉलम यहाँ यहाँ पे कवर हुए हैं और दो रो यहाँ पे कवर हुई है, उसको भी हम लिख लेते हैं 0 1 सी कॉम डी। और सेकेंड कॉलम सेकेंड रो होगा सी डी। सो केवल इतना हो रहा है तो हमने क्या कवर किया है, ये कवर किए दो रो और चारों को से मिलकर हमारा ऑक्टेट। अब जो कट से काट सकते हैं डायरेक्टली, जैसे दो ए के कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, ये कॉम्प्लीमेंट इस नॉर्मल ए से कटेगा, ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट ये नॉर्मल ए से कर सकता है। तो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ से दो बार कॉम्प्लीमेंट है, अच्छा एक बार नॉर्मल बी है, इसको को काट है, और ये बी कॉम्प्लीमेंट, इसको ओवरऑल ए और बी कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को रिप्लेस कर काट चुके हैं, रिजेक्ट चुके हैं कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास इक्वेशन बहुत शॉर्ट बन चुकी है। is टू, और दो बार डी है तो उसको हम एक बार से पहली इक्वेशन एस ए, इसको आपको देना इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आर ए के लिए निकालना होगा, एस बी आर बी के लिए निकालना होगा, एस सी आर सी के लिए, एस टी। और जब चारों इक्वेशन टोटल 6 इक्वेशंस, टोटल 8 इक्वेशन हमारे पास बनेगी। 8 इक्वेशंस को आपस में कनेक्ट करना होगा सर्किट के थ्रू। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आ- आप लोगों के लिए इक्वेशन, आप इसको ट्राई कीजिए, सभी को केमएप में फिल करके
इक्वेशंस क्या आती है उसको हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।